ठीक है, सी। Okay, students, shall I start now? Yes, sir. Hello. The first program Yes, was sir. area of rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमने ऑलरेडी किया था. चलो आज हम करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. वो सबको फॉर्मूला पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर? बोलिए फास्ट. फॉर्मूला फॉर Side square. साइड Side स्क्वायर. square. साइड स्क्वायर. जस्ट वेट. Just wait. I'll say integer s. S stands for side, and user has to give me the side, and then I will store one answer area. Okay, I'll store answer in area. So I'm going to tell the user that printf enter side of square. To find out the area, what you require? Side of square. You just tell me the side of square. I will give the area. Okay, so I'm just reading that number, whatever is the side, %d, comma, ampersand s. And then after getting the side, immediately I can find out the area by multiplying side into side. My program is done. Ho gaya khatam, right? Yes or no, students? Printf Yes, sir. area of square. Baki is all formality. Side of square is how much? %d, comma, e, and get ch and close this program. So look at this, the first line कुछ नहीं आपको करना ही पड़ेगा. Second line, third line, ये कुछ नहीं है. It's like a recipe you are collecting before you make any food. आपको side चाहिए, उसके लिए आपको user को बोलना पड़ेगा. Enter the side, scanf will read, and then this is just, I will call it as one line program. How will you find out the side, sir? I'll be saying side into side, and then the rest of the line, this you are going to display the output. That's all. पहले का आगे का लाइन अरेंजमेंट है, फिर क्लीनिंग है, देन यू आर आस्किंग द वैल्यू टू एंटर द वैल्यू, एंड देन दिस इज एक लाइन का प्रोग्राम है. डोंट काउंट सो मेनी लाइंस. ओके, एंड देन एरिया ऑफ स्क्वायर यू आर गोइंग टू डिस्प्ले. Suppose somebody may also tell you that can you also give me the perimeter of square? Yes sir, I can give the perimeter. So how will you give the perimeter to this? I'll say p is equal to 4 into side, right students? 4 times side is the perimeter. Yes, sir. So not only the area I have found out, I also have found out the perimeter. So I can write that output as well. Perimeter of square is equal to %d slash n. That I'll do. Okay, slash n. Why slash n? That you all know. So now I can write down this. I can save this program with square dot c. I mean square ka perimeter and area. So I can compile this program. It says no error, sir. And then I'm running this program. It says enter the side. I said side is 5. So area is going to be 25 and the perimeter is going to be 20. Is it correct, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, and sir, I it is hope correct. you all have understood. I hope you all have understood the program as well, right? Is there any difficulty in understanding the program? किसी को कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? आपका देखो पहला लाइन इंटीजर एस ए पी. एस आपको साइड स्टोर करने के लिए चाहिए. ए यू वांट टू स्टोर द एरिया आंसर स्टोर करने के लिए. पी टू स्टोर द पेरीमीटर. वो तो तीनों चाहिए ही चाहिए. क्लियर स्क्रीन क्यों रखा है? फॉर क्लीनिंग दैट स्क्रीन, you know. So if there is any content before that, you can just remove that, and then you display the message, fresh message, that enter side of square. So the user will read this message and will enter the value, and scanf will read that value. After reading the value, then your program starts. Now after getting the value, what you'll be doing?
Sir, I'll be multiplying in itself. That will become square, and then 4 times side will give you the perimeter. And once you're ready with both, you can display them. Okay, is that clear, students? Hello. Yes, sir. Next program, what they are saying, can you find out the area of triangle? Who can give me the area of triangle, students? Hello. Half into base into height. Hello. Just wait, just wait, just wait. Yes, half into base into height is the area of a triangle. But when I'm saying half base into height is not the formula applicable to all the triangles. This is applicable only to the right angle triangle, right, students? Hello. Yes, sir. Yes, sir. What Sir. if my triangle is a if my triangle is an isosceles triangle or scalene triangle? Students, then what formula will you be applying? Hello. Then what is your formula? Anyone knows that formula? Students, very poor maths. कहाँ से तुम लोग आए हो बाबा? जीरो बैकग्राउंड है तुम लोग का तो जस्ट वेट. चलो let me work out everything, then I'll write the C program. First board में मैं तुमको formula दिखाना पड़ेगा. People doesn't know the formula. Is my board is getting loaded? Students. Hello. Yes, sir. Yes, just wait. Just wait. So you students, you must have seen this formula. If I'll give you the 3 sides of the triangle, because the triangle can be like this, which is a right angle triangle. So ये A, B, C 3 sides आएगा. Triangle can be isosceles where the 2 sides will be equal. Third may be anything. Even it can be like this. The triangle can be like this where all 3 sides are different.
How will you find out these areas? कोई भी triangle का. So you have to take the three sides, then you have to add up them, right? And then area will be what? Area. Area will be, you must have seen this formula, square root of s into s minus a, s minus b into s minus c, right, students? I don't Have you seen this formula. Yes, sir. Which have you Sir, seen it this is formula? a plus b plus c by Yes, 2. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Have you seen this formula? So this will work for all the types of triangle. It's in general. Because if I'll write half base into height will be applicable only for this one. Only for the right angle triangle. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So I will make use of this formula to find out the area of triangle. That is one. Second thing. थोड़ी देर के बाद में I will be writing my third program where it says find out the volume of sphere. Sphere का volume कितना होता है? Volume of cone, volume of cylinder. Cylinder. ये क्या होता है सर? Volume क्या होता है? Students. Volume of sphere क्या होता है? Just check the formula. बताओ मुझे. 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r square. Pi r square Pi r cube क्या है? cube. Cube. कोन का क्या होता है? कोन का कोन स्टूडेंट्स 1/3 pi r Hello? square. 1/3 pi r 1/3 pi r square. square. And what about the next one? Cylinder का Pi r square h. pi r square h. ये बस माइंड में रखना है तुमको. एंड देन आई एम गोइंग बैक टू द सी Sir, प्रोग्राम. cone- और ये सर हाँ बोलो. कोन का भी 1 by 3 pi r square h है. 1/3 pi r square h, right? h है कि l है? Yes. H है sir, It is H. h. Okay, h है. L is for lateral surface. Okay, चलो I'm going ahead. Keep remember this formula, students. सबसे पहले मैं मेरा ये कर रहा हूँ ट्राइंगल वाला. So I'll require this. First, before you write down the program, उसका एक homework कर लेना है कि मुझे क्या क्या चाहिए. ट्राइंगल वाले में I require this, right? And then I require float area. Area stands for, I'll write area here. Is it clear? Triangle wala students. Hello? Yes, sir. Hello? Yeah, you should know कि हमने ये सब इतना क्यों लिख दिया. Because triangle का we have studied. Okay, what is this formula? A plus B plus C by 2. तो एक S आएगा और बाद में area आएगा. Then I am telling here printf enter sides of triangle, okay? And then you can go for scanf, %D, and comma %A, comma %B, comma %C. Then I'll have to apply my formula, that is A plus B plus C by 2.0. I did 2.0. There will not be any error in my answer. Then area is equal to square root. So there is a math function SQRT will give the square root S into S minus A into S minus B into S minus C. This is what the square root is. And printf. What is your answer? Area of triangle is equal to %D, comma, it's not %D, %F, comma, area. I am ready with my answer. कितने बच्चे जिनको नहीं समझ में आए?
हमने क्या किया, हमने चाहे देखा कि लाइक हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या है, जस्ट आई अप्लाइड माय फॉर्मूला। ये 2 लाइन का प्रोग्राम है, नथिंग मोर देन दैट, ये वाला हाईलाइटेड लाइन, राइट स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। Uh, क्या डिफिकल्ट है इसमें? व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू जस्ट टेल मी, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। ओके, नाउ बिफोर दिस I'll have to save this program, and thus my program name is triangle.c, and I will run this program. It says no error. Enter the sides of the triangle 3, 4, 5. Area is, wow, what a very good area, 3, 4, 5. Half 3, 4, 5. 3, 4, 5 is a right angle triangle, right students? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, sir. yes. Answer is 6, right? Answer is 6. Yes. Yes. चलो अब हम दिखाते हैं आपको ये Yes. हुआ क्या है। ये 3, 4, 5 क्या था? आई सेड 3, 4, 5 is a right angle triangle. So here you have side as 3, maybe this side is 4, maybe this is your 5. ये मेरा पाइथागोरस था, because 3 square plus 4 square is 5 square, right? Yes or no, students? Yes, sir. Yes, So sir. then Sir. then the formula here is 1/2 base. Base कितना है इसका? 4 है. Height कितना है? 3 है. Height is 3, this side. So then 2 1 जा 2 2 जा, then answer is going to be 6. Answer correct है हमारा? Yes, sir. Yes, 3 4 5 का answer is correct. So similarly फिर दूसरा आंसर भी करेक्ट होएगा. You don't have to worry for that, right, students? But initially you Yes, must sir. have noticed कि सर आपने पहला वो आंसर रॉन्ग क्या है, इतना बड़ा आंसर क्या आया था? You have not understood that, right, students? Yes, sir. Hello? Not understood. Yeah, the reason behind this earlier, now I have included my math.h. Actually square root ने क्या किया था? Square root is a function, ready-made function which always find out the square root. और वो square root is already defined this in this library. This is called header file library. यहाँ पे square root रहता है, उसका घर जो है वो यहाँ पे रहता है. तो क्या हुआ कि अगर मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं किया तो जब बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं देखता है ना तो इधर उधर भटक जाता है. तो वो कुछ भी वैल्यू दे रहा था, कुछ भी आंसर दे रहा था, बिकॉज उसको कुछ पता नहीं क्या करना है. सो आई सेड टू माय प्रोग्राम फॉर द स्क्वायर रूट, प्लीज लुक इनटू दिस लाइब्रेरी, दैट इज #include. ये लाइब्रेरी आप इंक्लूड करो. #include क्या? math.h. Why I'm including this math.h? Because of my sqrt function, because sqrt, sine, cosine, tangent, whatever, these all are available in this particular library, students. Is that clear? Hello? Yes, sir. Yes, तो sir. वो ये मुझे लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा तभी वो ठीक से चलेगा. देन दिस प्रोग्राम, योर प्रोग्राम, ट्रायंगल प्रोग्राम विल अंडरस्टैंड द कोड ऑफ sqrt कि sqrt को कैसे चलना चाहिए. Because sqrt का कोड you have not written, you are calling a ready-made function, that is built-in function which is there in C. मतलब कुछ प्रोग्राम आप लिखोगे और कुछ रेडीमेड आप यूज कर रहे हो. जैसे क्लियर स्क्रीन का आपने लिखा है क्या क्लियर करने का? नहीं सर, आई एम जस्ट कॉलिंग बाय नेम एंड इट वर्क्स. printf आपने लिखा है? नहीं, आई एम द मोमेंट आई से printf it does the needful, scanf it does the needful, sqrt it does the needful, सब रेडीमेड है, राइट स्टूडेंट्स? So where are they Yes, sir. defined? They are defined in math.h, sqrt वाला. और printf scanf कहाँ रहते हैं? You know that they are living in #include stdio.h. This called standard input outputs. std stands for standard, I means input, o means output. Standard input output header file. अगर आपको आपके प्रोग्राम का इनपुट आउटपुट फंक्शन देखना है तो ये सब लोग ये वाले हेडर फाइल में रहते हैं, दैट इज stdio में. मैथमेटिकल से रिलेटेड कुछ करना है, दे ऑल रिसाइड इन math.h.
So let us compile this program and run this program. What you can see that you change the number now. I'm changing 6, 8 and 10, which is again a Pythagoras. 3, 6 square 36 plus 64, which is 10 square. So answer is 24. Just check, is it 24? Half into base is 8 into 6. Yes, right? Yes, sir. Students. Yes, sir, it is 24. Yes, sir, it is It is 24. That means whatever we have written is a correct one, right? Now we are ready with my, that is, I have finished my area of rectangle, square, triangle for the volume now. Next one, volume of sphere, somebody said. Void main sphere. What is the formula? 4 by 3 pi r q, right? Students. Yes, sir. Yes, sir. 4 by 3 pi r cube. That, but the radius can be, somebody may say radius is 2.5, 3.5 or 2 or whatever. It is some, it can have a float value or integer value, right? For that program 4 by 3 Yes, तो sir. हम निकाल देंगे. पाई हमको पता है, पाई कितना होता है, पाई वैल्यू. एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड. हाँ मैं तो वही तो मैंने किया, वही तो मैंने सेंड किया था जो ये था. अच्छा मैं आपको रीसेंड करता हूँ बिकॉज आई एम इन द लेक्चर राइट नाउ. हाँ मैं सेंड कर रहा हूँ अभी. यस आई एम सेंडिंग यू राइट अवे. आई एम सेंडिंग यू. ठीक है. हाँ just wait students, 1 minute, just wait. Yes, students. So what do I require for this sphere? I require the radius, and then I'm going to find out the volume. But before that, I can have pi. I require pi ka value. I require volume. So pi I can have. I know what is my pi ka value is 3.1415. मैंने already fix कर दिया, right? Is that clear, students? Yes, sir. Yes, Hello. sir. Now I'm going for my clear screen. What is the next step? Anybody can tell me? I can write enter radius of what? Rectangle? A sphere. हाँ ये नहीं तो Sphere. अच्छे बच्चे कुछ भी लिख देते हैं. बोले एंटर रेडियस ऑफ रेक्टेंगल. बोले रेक्टेंगल में रेडियस किधर होता है?
enter radius of sphere, and then I'm going to tell my scanf, please get one float value and store it in R, right? I got the answer. I mean sphere ka radius, I got it in R. Then V stands for volume. Volume is equal to what? You said 4 by 3. 4 by 3 into pi into R into R into R. Oh, 4 by 3 pi R Q हो गया कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. होगा. बट ये आंसर तो हमारा 0 हो जाएगा. बताओ कैसे? Will you get the correct answer? No, sir. This answer may not be 0, but I will not get the correct answer because 4 by 3, 4 upon 3 answer is 1 point something something, but it will not take that something part. Okay, it will take integer by integer is integer. So what is to be done? मुझे क्या करना चाहिए? Can I have 4.0 divided by 3.0? ऐसा कुछ कर दे. Now will it be correct? Yes. Hello. I hope you are getting my point. Yes, what sir. I'm trying to tell you. Yes. Now you can go for the display of your answer. Print F. Volume of sphere is equal to %F, comma V. I am ready now. Get CH and then close this. So let us save this program with volume SPH, that is sphere dot C. Compile this. No error. All my entire program is correct. I can run this now. If you all want to verify, you can verify. I just enter the radius as 2. You all can check. You tell me what answer you are expecting. Calculator से multiply करके देख लो बाबा. 4 by 3 divide into 3.1415 into 222. Just check what is your answer. Students. Hello. Yes, sir. What is your answer? Baba, I said 4 by 3 into pi, that is 3.1415 into 33 2, point that is something. 33 point something. Because you should calculate the answer always first, then you check अपना answer. Right? You should know the नहीं तो ऐसा you should not trust कि बाबा answer whatever computer is giving is going to be the correct answer. No, you should know the answer first. Now I know the answer. So is it correct now? 33 point something, right? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Now you can trust कि भाई हाँ ये बराबर दे रहा है. Whatever I calculated, I'm getting the same answer. Now you can try for any other values. I may run for my next value, any other values. I may give you 3.5. So you should trust this answer now. Right? You should Yes, trust sir. this answer. Yes. Yes, sir. अगर और चलो मैं रेडियस 1 किया तो आप फिर से एक बार वेरीफाई कर लो. You should verify for the smaller number. 1 के लिए आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज 4 by 3 into 3.1415. क्या आंसर आ रहा है? 4 by 3 into 3.1415. What is your answer? Students? 4.1. जस्ट चेक करते हैं हम लोग. बराबर है? Yes. Yes, sir. तो कैन आई Yes, ट्रस्ट माई sir. प्रोग्राम कि भाई हाँ ये 2 के लिए मैंने चेक किया है बराबर आ रहा है तो बाकी के लिए भी बराबर आएगा. कैन वी ट्रस्ट दिस प्रोग्राम नाउ देन? राइट? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. So you try with the smaller value, you check on your own. You should not tell always that your program is correct. पहले आप खुद से check करके देखो, verify. Then you should try go for the general one. So I'm ready with this program, volume of sphere. Then I want to go for the volume of cone. You said volume of cone, cone dot c. For cone, what do I require? I require radius. I also require height, right? Height, na students? Yes, sir. Right? Yes, sir. So Yes. then you say Yes. enter radius and height of what? Of cone, right? Is it clear, students? Yes, sir. And while reading, you have to read the two values now.
%f एक और आ गया, कॉमा %h, रेडियस और हाइट दोनों आ गए. You'll have to change the formula now. Volume is 1/3 pi r square, somebody said, right? Square H. Done? Pi r square into h. Is that clear, students? H. Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. So now Yes, you are sir. having pi r square h, 1/3 into pi r square h. That is your volume. So now I'll change my answer. Instead of sphere, I'll say volume of cone is equal to. I'm ready with my program. Done. कितना time लगा लिखने के लिए बोलिए ना sir? Hardly even a minute to write a program. Volume of cone is equal to. Let us check now. Let us check whether we are correct. So run this. Enter radius and height of cone. Radius is 2, height is 3. Answer बताओ पहले. Answer check करो. Radius is 2. 2 square 4 into 3 is 12. And then 1/3. और ये 12 4. cancel हो जाएगा. हाँ, तो ये 4 into 3.14 कितना हो रहा है? 12.56. चलो चेक करते हैं. राइट? Yes, sir. Correct. Yes, sir. We can Yes, sir. trust this now. Yeah, we can trust this then. 12.56. Now you start playing. आप कोई भी वैल्यू एंटर करो. आपको ट्रस्ट हो गया ना, हाँ मेरा प्रोग्राम बराबर है. You change the height and radius and height, whatever height and radius you want for the bigger value also, right? Always do check the program. Now I can give maybe 3.75 मेरा radius है सर और मेरा 8.95 मेरा height है. कोई बात नहीं, अब मेरा प्रोग्राम वो भी आंसर करेक्ट देगा. आपको ट्रस्ट करना चाहिए, right? If you want, you Yes, can sir. check for some more smaller value which you can calculate easily. चलो next program. Next is sir volume of cylinder. क्या बात किया सर? Volume of cylinder dot c. Volume of cylinder dot c. Now for cylinder, what all things I require? What is the formula? Students, pi r square h, right? Pi r square H. So I'll say pi r square h. I'll say enter radius and height of cylinder. I change my definition, Cylinder. right? No, and I Yes. don't want this 1/3, 2/3, whatever it is. Pi r square h, and then I'm just displaying my answer as cylinder. And then I said volume. Done. हो गया program. How much time you have taken? Enter. I said radius and height of cylinder. And then let us run this program. रन करते हैं हम लोग. फिर से मैंने 2 दे दिया. चलिए बताइए सर इसका क्या होगा आंसर? पाई 24. r स्क्वायर. r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 25. 4 into h 8 और 3.14 25. 12. चलो चेक करते हैं. देखो 25.13. ठीक है, कहीं ना कहीं राउंड ऑफ हो रहा है, बट वी आर क्लोजर टू द आंसर, वेरी क्लोज टू द आंसर, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. So what you have seen that just now I wrote so many programs with you within no time. I wrote for rectangle, square, triangle, volume of sphere, volume of cone, volume of so many things I have written for you all, right? Now let us see your syllabus first. Yes. So I wrote this first practical is done from our end. Check whether the number is even or odd. Check whether the given number is positive, negative or zero. ये भी अभी हम कर देते हैं. 2 मिनट कल हमारा डिस्कस हो रहा था ये सब चीज. Check whether the number is even or odd. So again I will go for the new program. And the program is again start with the void main.
and I want a number from you all. Give me the number. I'll call my sweeper for cleaning work and printf, enter an integer. And then whatever number you have given, I need to tell you that whether that number is even or odd. So %d, first I will take the number, I took the number. Now I have to take my decision. Now to take the decision, students, I know there are two possibilities for this number. Either this number what user has entered is even or it can be odd. So you require one control statement which I haven't started. There are three types of control statement. One is called if, next is called if else, third is called switch. If else, switch. Students, hello. Yes, sir. Yes, sir. Got it. लाइफ में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. Without control there is no life. If it's not that those who are applying in SIS, everybody is getting the admission in SIS. No, there is a control. What is that control, sir? If your maths marks is more than so and so, then you are inside SIS. If otherwise, everybody will say that I want admission, I want admission, I want admission. The college will not give the admission to everybody. So there is a control. That controlled is controlled by if, right? Now, wherever there is a placement job, people are looking for the job. Everybody will go for the higher job, but there is a control, sir. Have you done this particular course? If yes, then have you got this much percentage? Yes. Then have you cleared my aptitude? Have you cleared my GD? Have you cleared my interview? Have you cleared my technical? Have you cleared my HR? So many controls are there. Then the people are being filtered out. If you are clearing everything, otherwise everybody will look for the better job, right, students? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Is wherever you are staying, is wherever you are staying in your building, is there is any control? Anybody can come inside your campus, or there is a security guard? Who There can is a enter in security your- guard. Security guard. Who can enter in your building? If the person is residing in your building, right, then only that person can enter. Otherwise, outsider Yes. somewhere they have to make an entry, right? Yes or no? Yes. 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 So student control is required. And if you are not going to attend the lecture on time, then what will happen? If you are not attending the lecture on time, what will happen then, students? We will not be in the meeting. If you don't know that driving, the license can be given to you. No, sir. No. No, there is a control. If you are applying for the driving, many people are applying for the driving license, but they check whether you know the driving. If yes, then the license can be given. Do you know the driving? The license Yes. can be given. Yes, No, Yes. I will not say no. I will not say yes. I'll say no. Is the age is more than 18? Have you checked that? Second control. If the age is 18, even the 16 years ka students or the anyone knows the driving, can I give the license to that person? No, sir. no, No, sir. So we need to check No. many conditions. Is your age is greater than 18? Do you know the driving? Can I give the license based on these two conditions? No, sir. Hello. Then what else we have to check? Yes, Sir, Kunal. eligibility. What is that eligibility? Sir, 10th pass. अच्छा, वेरी गुड. थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, 10th पास भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ा लिखा ही नहीं है एंड अप्लाइंग फॉर द लाइसेंस. वेरी गुड. व्हाट एल्स, कुणाल? कुणाल. Above 18. Sir, I know that much. ओके, सो मैंने अबव 18 तो मैंने बोला अबव 18 होना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए. कुणाल ने बोला सर मिनिमम 10th पास तो होना चाहिए, राइट? एंड स्टूडेंट्स, अभी मैं और ऐड कर देता हूं कि एनीबडी हु इज अबव 18 एंड 10th पास एंड नोज द ड्राइविंग कैन गो फॉर द लाइसेंस, विल गेट द लाइसेंस, और एनीथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड? A test No, is basic. a test is taken, sir. color blindness or something. अच्छा, कलर ब्राइटनेस. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा हुआ बच्चे देख रहे हैं कि यार उसको दिखाई पड़ता है कि नहीं होता है.
अदरवाइज वी कैन नॉट। अगर क्लाइंट कलर ब्लाइंडनेस है तो स्टूडेंट्स फिर उसको तो ड्राइविंग ही नहीं आएगा, वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? Yes. Yes, sir. Yes. यस। दूसरा ये बात आएगा कि आई थिंक नोबडी चेकिंग इज दैट पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि कोई कहीं का भी आएगा और इंडिया से लाइसेंस लेके जाएगा। दैट पर्सन इज हैविंग अबव 18 का एज है, 10th पास है और ड्राइविंग आता है, तो आके इंडिया में लाइसेंस मिल रहा है क्या फ्री में? बोलिए सर। No, sir. No, No, sir. citizen of India. So that is what you can see. If is very, very required in the programming. If there has to be a control. If you are not going to behave properly at your home, wherever you are sitting right now, misbehave with your siblings, with your parents, then what will happen? If you'll do that, then what will happen? Will be thrown out of the house. You will be thrown out of the house. Very good, very good. So if you are going to misbehave with your neighbor, then what will happen? Society will welcome you. They'll shout us. They will complain. Yes. They will complain. So look at this. Where do we require if? We require, sir, if everywhere in real life. Whenever you are walking on the road, can you walk from the center of the road? No. Foot. No, sir. No, you cannot walk from the center of the road. So that means if I am doing my programming, when you will be becoming a software engineer, right? And then suppose you are making a software for maybe for some college or the school, their result generation. So आप सबको पास कर दोगे क्या? जैसे ही मैंने marks enter किया in your all five subjects, are you going to tell everyone that you are pass, or you'll be checking some condition? किसको पास बोलोगे आप और किसको फेल करोगे? बोलिए सर। 35 marks. Yes, if every student का The minimum person which internal has is good 60. marks. So not question of good marks. Every subject में there are three components: internal, external, and practical. If the person first subject is your internal is more than 16, first subject का is your external is more than 24 or more, practical is 20 or more. Then I'll check the second subject, third subject, fourth subject, fifth subject. In every subject, if you are fulfilling all these conditions, then I will tell you pass. Otherwise, if anywhere you have, एक में full भी होएगा, दूसरे में internal में एक mark से गया, तो I will say fail, right? Yes or no? Yes, sir. Students. तो जस्ट देखो हमको इफ अगर मान लो हमारा ट्रेन है, सिग्नल नहीं है, तो क्या चलेगा? ट्रेन का कैसा चलेगा फिर? इफ देयर इज नो सिग्नल टू द ट्रेन, देन व्हाट विल हैपन? इफ देयर इज नो रडार सिस्टम टू द प्लेन, देन व्हाट विल हैपन? Crash. Crash. If there is no satellite system for the communication, then what will happen? No communication. No communication. So you can see Yes. everywhere in the real life, what do we require is a control. We cannot survive without control. Can you order at any point of time to your parents or mother that at 2 o'clock, 3 o'clock you are hungry or anything? कुछ भी order करोगे, चलेगा ऐसा? Every day? One day it's okay. Every day चलेगा? नहीं No. चलेगा. You want to attend the No, lecture sir. at 12 o'clock, 1 p.m. night में चलेगा तुम्हारे हिसाब से? No, No, sir. no. Nothing will happen like this. No. No, ऐसा नहीं है, right? So if there are three control in programming, if else, and switch case, as and when the time will come, I'll tell you. But right now, I am going ahead with my first program, checking whether the number is even or odd. Okay. So let me go ahead with the program. Now you'll have understood the importance of your if. So after getting the number, I'm checking if I'll divide the number by 2. Somebody told me, sir, divide the number by 2. And if the remainder is 0, this also I had told you yesterday, double equal to. नंबर को 2 से डिवाइड करके देखो कि ये जो इसका रिमाइंडर जो n% 2 से आ रहा है और वो 0 हो रहा है क्या? बोथ द रिमाइंडर्स आर इक्वल. इज n% 2 का रिमाइंडर इज इक्वल टू 0? If yes, then I'll say printf what? %d is what? Even, right? अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? हेलो Am I audible? Yes, If the sir. remainder Yes, is sir.
if the remainder is 0 means what? Number even हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Right? Even. Else I'll say printf what? %d, that number is odd. हाँ, अगर वो, क्योंकि अगर डिविजिबल है तो इवन बोलना, नहीं डिविजिबल है तो चेक करने का जरूरत ही नहीं, फिर वो दो ही चीज हो सकता है, बिकॉज इवन होगा या ऑड होगा। तो मैंने चेक किया, अगर इवन है तो इवन बताएगा, नहीं तो फिर ऑड बताएगा, राइट? सो आई विल गो विद द get.ch now and I'll close this now. Check this. What is this? Program is even odd dot c. Check. Run. I entered 45. Sir, it is saying 45 is odd. Correct है ना? Yes, sir. Right, sir. Yes, Yes, sir. so correct. चलो अब हम दूसरा एंटर करते हैं। I entered maybe say 22. It is saying 22 is even. सही बता रहा है हमारा प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. There was one program which said find out whether the given number is even or odd. कितना टाइम लगा बताने के लिए? आपको आपने नंबर को 2 से डिवाइड किया, चेक किया, इज द रिमाइंडर इज 0. इफ द रिमाइंडर इज 0 देन यू से इट इज इवन, अदरवाइज नो नीड टू चेक ऑड, आप फिर ऑड बोल दो, राइट? या फिर इसको यू कैन राइट अदर वे राउंड ऑल्सो। मैंने पूछा इफ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो, नॉट जीरो, नॉट जीरो है तो फिर इसको ऑड बोलो, राइट? और नॉट जीरो है तो मतलब उल्टा क्या होगा उसका, रिवर्स। फिर वो नॉट जीरो है तो दूसरा एल्स में आ जाएगा इवन, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. When will you say Yes. odd? When will you say odd? If it is not zero, right? Because divide करेंगे तो रिमाइंडर या तो जीरो आएगा या तो नॉट जीरो आएगा, राइट? Only two possibility. Hello? Hello? Yes, sir. I hope you people are getting my point, right? Not equal to zero. दो exclamation जो marks है not equal to, that is not equal to zero. That is number is not zero. When I'm dividing by 2, I'm not getting the remainder as 0. Then you say odd. Let us run this and check. I entered the number as 99. It's saying 99 is odd because 99 by 2 0 नहीं हो रहा है, right? And when I enter maybe number say 100, it's saying 100 is even. Is it correct, students? Yes, sir. Yes. So this is one program. Next program जो वहां पे दिया था, sir check whether the number is negative, positive or zero. So चलो हम देखते हैं हमारा NPO, NPZ, ऐसे मैंने प्रोग्राम का नाम दे दिया NPZ, that is नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, चलो इसको ही मैं चेंज कर देता हूँ नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो मुझे नंबर मिल गया है, अब मुझे बताना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि जीरो है। तो अगर आपका नंबर ग्रेटर देन जीरो है, सो व्हाट विल आई से दैट, क्या मैसेज देना चाहिए स्टूडेंट्स? Number is positive. Positive. पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव है, राइट? अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, दैट मीन्स इफ नंबर इज लेस देन जीरो है, तो क्या मैसेज होना Negative. चाहिए? Negative. Less than zero. Yes. So I will say it is, I'll change my message. I'll say it is negative. और अब ना लेस देन ना ग्रेटर देन जीरो है, ना लेस देन जीरो है, तो अब कुछ बचा ही नहीं, फिर वो जीरो ही होगा, राइट? गेटिंग माय Yes. पॉइंट स्टूडेंट्स? तो उसको Yes, चेक sir. करने का जरूरत नहीं रहता है, बाय डिफॉल्ट फिर वो जीरो हो जाएगा। बिकॉज इफ इट इज नॉट ग्रेटर नॉट लेस, फिर वो है क्या सर? वो तो फिर जीरो है, राइट? सो मैं कंपाइल करके रन करके देखता Yes, हूं। sir. मैंने बोला नंबर मैंने दिया मे बी 101 दिया, तो इट इज नॉट इंटरेस्टेड 101, इट इज ग्रेटर देन जीरो। देखो आपको, देखो जीरो भी बोल रहा है, ये कैसे पागल जैसी बात कर रहे हैं, राइट? एल्स जीरो बोल दिया इसने, दोनों नहीं आंसर चाहिए। चलो मैं इसको हटा देता हूं एल्स को, थोड़ी देर में मैं इस पे आऊंगा। इफ नंबर इक्वल टू जीरो, मैंने सेपरेट कर दिया, केवल इफ में लिया मैंने। If the number is greater than 0, less than 0 or equal to 0. Let us check. I said 101. It is positive, right? Is it positive? Yes, sir. Yes, sir. Now I'm changing my number
I said -99. क्या कह रहा है ये? नेगेटिव राइट है सर। राइट है। चलो अब मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने ऐसे ही नंबर 0 एंटर कर दिया। देखो, हैव यू सीन द आउटपुट? 0 दिखाई दे रहा है? हेलो, यस Yes, sir. यस यू कैन सी दैट Yes, यस sir. हमारा ए बी प्रोग्राम हो गया, नंबर इज 0, राइट? सो विद दिस आई विल वाइंड अप टुडे सेशन। आई हैव कवर्ड अ लॉट टुडे, बहुत कुछ हो गया आज की डेट में, ठीक है? एंड दोज हू आर एब्सेंट दे आर द लूजर्स। Now, I think I should give you this program, whatever I have written at my end, so that you also can practice, right? Shall I give you the program? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, please. हाँ, प्लीज प्लीज बोल रहे हैं बच्चे, प्लीज सर दे दो। तो हमारा प्रोग्राम है कहाँ? हमारा प्रोग्राम है टीसी के टीसी टर्बो C3 में, बिन में। आज के प्रोग्राम के नाम कुछ पता है? एरिया ऑफ सर्कल था ना? एरिया ऑफ सर्कल, यस सर। और क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, Triangle. Triangle. हम लोग देखते हैं ना और कौन है। Side वॉल्यूम of ऑफ square. स्पीड। हाँ, वॉल्यूम थे ना, 3 तो वॉल्यूम थे। Volume. हाँ, चलो वॉल्यूम में जाते हैं हम लोग। पहले ये सेंड कर देता हूँ मैं। ये कौन है? एरिया ऑफ Perimeter. रेक्टेंगल ट्रायंगल। फाइल नेम जरा याद रखा करो, आई डोंट रिमेम्बर द फाइल नेम। चलो मैं और अभी वॉल्यूम वाले देता हूँ आपको। वॉल्यूम, वॉल्यूम किधर है बाबा? ये कहाँ आ गया? एक सेकंड, ये तो जावा प्रोग्राम है। टर्बो सी, बिन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट? ये क्या है? ये नहीं है, ये है। ये मैंने 3 आपको एक और दिए आज। ये और कुछ याद है? यू वांट सम मोर? आई कैन गिव यू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हेलो, Yes, sir, please. अभी कुछ और याद है Yes, क्या sir, फाइल please give में? it. अच्छा, इवन ऑड भी सर किया और आपने? ऑडियो। Even odd. इवन ऑड, Swap वाला भी. Swap वाला. हाँ स्वैप वाला, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसा सब फ्री वाला सबको याद रहता है, राइट? खुद लिखना नहीं है, लेजी बच्चे हैं, राइट? सो NPZ था एक, NPZ, और स्वैप वाला चाहिए, स्वैप वाला भी ले लो। हाँ, कल का स्वैप का इंपॉर्टेंट था। सो स्वैप, स्वैप वाला, स्वैप स्वैप स्वैप। ये स्वैप 1 आ गया, कहाँ से आ गया? स्वैप देख लेना है कि नहीं है, नहीं तो बाद में फिर चेंज कर लेंगे हम लोग। और क्या चाहिए? बस ना, Even अभी odd. याद रखना। अच्छा, इवन ऑड भी चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओह, इवन ऑड, टर्बो सी, पिन में इवन। Years and seconds. हाँ, और क्या चाहिए? और भी चाहिए। अभी बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो भूल गया सर आपको, हाँ, years भी राइट? बाकी है. हाँ, ये वो भी बाकी है सर, बहुत Seconds. बाकी है। सब खुद से लिखा है कि नहीं लिखा है? सर ट्राई किए थे सर। हाँ, ट्राई देखा करो है तो बस। ये सिंपल इंटरेस्ट मैंने दिया। अब ये मत बोलना सर मेरा रॉन्ग हो रहा है, ये क्या हुआ है, आई कुडंट एग्जीक्यूट। अब आपको मैंने रेडीमेड प्रोग्राम दिए हैं, द वन विच, एंड स्टूडेंट्स एक चीज और याद रखना, द काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग विच आई एम डूइंग, लाइव प्रोग्रामिंग मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, लाइव इन फ्रंट ऑफ यू आई एम राइटिंग द प्रोग्राम विच यू कैन इंक्वायर विथ योर फ्रेंड्स दो जो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। कोई भी टीचर ऐसा लाइव प्रोग्रामिंग आके नहीं करेगा, जस्ट बोर्ड में लिख सकता है बट विल नॉट टाइप द प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स।
क्योंकि रॉन्ग होना चालू होता है ना, देन दैट स्टूडेंट्स विल फील कि टीचर कोई नहीं आ रहा है, राइट? नोबडी इज टू टच द लाइव प्रोग्रामिंग. दे मे सेंड यू द कोड इन द व्हाट्सएप, दिस इज माय कोड, लिखने के बाद में दे विल एग्जीक्यूट एट देयर एंड फर्स्ट, बट सामने सामने कोई ट्राई नहीं करते हैं स्टूडेंट्स. गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes, sir. आप खुद ही इंक्वायर करना बाद Yes, में, sir. दो जो हैव जॉइंड दिस कोर्स, कि उनके यहाँ क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है. What level we will be reaching and what they will be doing. Later on, we will come to know, not now. And whatever programs are